अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फैज़िया। आज हम अपने किचन में चिकन समोसा फिलिंग बनाने जा रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बनाकर 1 से 2 हफ्ते फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपको चिकन समोसा, पेटीज़ या फिर चिकन क्रैब खाने का मन हो, आप इससे फटाफट उन सब चीज़ों को बना सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 400 ग्राम चिकन कीमा लिया, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसका हमने पानी को सारा ड्रेन करके और इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम यहाँ पर हाफ़ कप पानी ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। प्याज को डाल देना है, यहाँ पर कैबेज को डाल देंगे और फिर इसमें हम ग्रीन चिली को डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। जब ये हमारी फिलिंग ठंडी हो जाएगी, तब आप इस टाइप के किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में इसको आप स्टोर करके 2 से 3 हफ्तों के लिए आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।